Hello everyone, welcome to my channel. My name is Omika and this video is all about me sharing my CAT 24 journey with you. The learnings that I had and what I believe were my mistakes that I did in my preparation that I couldn't achieve my desired percentile. I hope it helps you. But I want to tell you that this is not my failure story. I mean, it was just for the thumbnail because I don't feel that I failed. Because I did pretty good in other management entrance test. And other than that also, if I wouldn't have done good in that exams as well, I won't consider myself as a failure because what I believe is हम इन सब एग्जाम से सीख ही रहे हैं कुछ ना कुछ एंड ऑफ कोर्स कुछ लर्निंग्स ही थी जो इसमें ये वीडियो बना रही हूँ about my learnings in CAT and exam and the mistakes that I did in my CAT exam that some way help you as well and to me as well for my further exams. Though to clarify, 99% I'm pretty sure that I'm not going to repeat CAT this year. I want to take admission anyway. And also I would like to tell you that till now I cannot say that I have decided a college or मेरा एडमिशन इस कॉलेज में कंफर्म हो गया है और समथिंग लाइक दैट बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो इट्स जून. कैन यू इमेजिन अभी जून का महीना चल रहा है. आई एम ऑलरेडी कन्फ्यूज बिकॉज मैंने ना इतने कॉलेज में अप्लाई किया एंड मुझे कैट भी रिपीट नहीं करनी है बट आई एम ऑल कन्फ्यूज विद माई डिसीजंस. सो इफ़ यू आर लाइक मी प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिकॉज सम things are going on and it's so weird and everything is messed up right now. But anyways, let's move into the topic, the mistakes. तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैंने कैटेगरी 3 भी दी थी एंड कैटेगरी 4 was my second attempt and giving CAT twice. One improvement was there, like I scored 55 percentile in category 3 and 72 percentile in category 4. So improvement to hai. It's just that I was feeling sad that the improvement was not what I had assumed. Like मैंने सोचा था कि I would crack this exam like with 99 percentile and all of that. But it doesn't mean कि मैंने improve नहीं किया पिछले साल से. But anyways, mistakes are mistakes. So जो पहली mistake है वो यही है कि if you know कि CAT exam में जो quant वाला section होता है उसमें जो major 2 topics होते हैं algebra and arithmetic, which are the most important topic. Like 60 or 70% of the questions of quants are from those topics. So you have heard also from many YouTubers or maybe from coaching or anywhere that अगर आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो उन्हीं पे फोकस करते हो तो भी आप 99+ स्कोर कर सकते हो कौन सेक्शन में. सो मैंने मिस्टेक्स 2 बार करी है. लाइक मैंने इन दोनों सेक्शन पे ही ज़्यादा ध्यान दिया. राइट टेल यू मैंने 2 साल हो गए और जियोमेट्री आज तक मैं कंप्लीट क्या करा मैंने उसे शायद खोला ही नहीं है. मुझे उसके फॉर्मूले भी याद नहीं है. दिस मिस्टेक आई डिड ट्वाइस कि बिकॉज 2-3 क्वेश्चन के लिए कौन करे. बट ऐसा नहीं होता. व्हाट आई बिलीव इज कि एग्जाम देते समय you never know कि क्या आपके लिए काम कर चले. If you're solving 8 questions, maybe 3 questions you solve from arithmetic and algebra and 2 from geometry and 2 from that. Like you have to have backup option. Like if some reason like that happened to me, like I couldn't solve arithmetic and algebra questions, which I was believing that this is something which is my strength or all of that. But and honestly वहाँ पर कुछ easy questions थे geometry that I could do, but also geometry and number system and everything जो मैं कर सकती थी, but नहीं कर पाई because of my preparation that I was not focusing on those topics. So this is really mistake. Like I accept that this was my mistake. I didn't complete the whole syllabus. You have to complete it. Other most important reason, if you are a repeater, अगर आप CAT repeat कर रहे हैं, then this is for you. जब मैंने लास्ट ईयर भी CAT 24 की तैयारी करी थी 2023 देने के बाद, तो मैंने 2023 में सारी ही एग्जाम्स दी थी. लाइक ऑलमोस्ट जितनी भी वोमेंट्स एग्जाम होती है अदर देन CAT, लाइक CMAT, ZAT, CUET, PG, SNAP एंड ऑल अदर एग्जाम्स जो भी होती है मुझे याद नहीं है, मैंने सब दी थी. एंड मैंने CAT 24 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से सबसे पहले ये डिसीजन लिया था कि दिस ईयर आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर CAT, बट in general for all other management entrance tests, like you have to have a backup option. Like see, CAT exam is, we have our goals. Like मुझे भी IIM जाना था और want to do something like that, but you need to understand that 3 lakh students appear करते हैं इस exam में and seats for IIMs are around 5,000. So of course not everybody will get the opportunity, but it doesn't mean that you're not deserving or something like that. It's just there's no seats available. So maybe sometimes I have seen examples where the students score 98+%, 99%, but still not getting grants or their dream schools. So you have to be realistic. You can't think that हो ही जाएगा या कर ही लेंगे. You have to have back option if you really want to. If you are, especially if you're taking a drop or you really want to get into good B school this year itself, like you don't want to waste your time. Because these options are really good. Like CAT is indeed very difficult exam. मैंने इसके अलावा अभी भी सारी exams दी हैं. I scored good marks in other exams, and I still believe that if last year I would have prepared only for these exams, I would have nailed this exam and I could get good colleges through this. Like for example CMAT. मैंने last year CMAT दी थी and the only decision I took was कि मैं सिर्फ CMAT की preparation करूँगी. CAT की बिल्कुल भी नहीं करूँगी. Because CMAT is easier and if you really do good, like good means getting 99.9 percentile in CMAT, then you will get a very good colleges through CMAT as well. So that was my thought before preparing for CAT 24. But again, I did this mistake. I was like, no, but how can I miss this chance? CAT is CAT and IIMs are IIMs and all of that. So it was not a mistake, but maybe you understand me. Like, it's important to have backups, and these exams are really good if you honestly concentrate on this exam, then CAT, and just appear for CAT. No worries, syllabus are almost the same, but फिर भी एक pattern होती है exam की, एक अलग strategy होती है that you need to follow. For example, जब मैंने CAT 3 दिया था तो मैंने सारी एग्जाम में अपीयर किया, बट आई नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम बिकॉज कोई स्ट्रेटजी नहीं थी. एक के बाद एक बजे एग्जाम आ रही और सारी एग्जाम 15 to 20 डेज के गैप में हो रही थी. सो आई नॉट प्रिपेयर्ड. जस्ट दैट कि मेरा सिलेबस कैट का हुआ था उस हिसाब से एग्जाम दे देते. तो ऐसा नहीं होता. यू हैव टू गिव मार्क्स ऑफ दैट एग्जाम एज वेल एंड ऑल ऑफ दैट. यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स टू इफ यू एक्चुअली वांट टू बी correct that exam. For example, MBA CD if you see, अगर like I scored 98 percentile
I'm not flexing 98 percentile because of course it's not care exam, but in indeed अगर आप अभी भी if you start preparing for exam MBA you can get to JBMS if you score 99 plus 9 percentile because अभी पूरे एक साल बचा है इस एग्जाम में. दिस एग्जाम मैंने दिया है और कैट भी दिया है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये एग्जाम कैट के एग्जाम के लेवल से ईजी थी. और अगर आपको लग रहा है कि कैट इज डिफिकल्ट या फिर आपका जो भी आप जितना भी पढ़ पा रहे हो या जो भी कर पा रहे हो, यू थिंक कि अगर थोड़ा सा ईजियर टॉपिक अगर आपको कैट से मिले या फिर क्वेश्चंस मिले तो आप उसमें सच में अच्छा कर सकते हो. देन दिस एग्जाम्स आर रियली फॉर यू एंड दिस एग्जाम आर नॉट लेस देन कैट एग्जाम. लाइक you have to understand that JBMS is a very good college. Like जिसका it's top 5 it comes under top 5 B schools in India. So and same goes with other exams as well, like CUT, PG, CMAT, ZAT. All these exams are really important. Snapseed, I want you to understand that prioritize these exams as well. If you really want to invest this year and start preparing for these exams as well. Like don't just depend on CAT and everything. That's what I ultimately want to tell you. And another reason which I don't want to believe, but of course when जब मेरे कैट का रिजल्ट आया था एंड आई शेयर्ड ऑन यूट्यूब तो मुझे बहुत कमेंट्स मिले थे कि अगर आप यूट्यूब नहीं बनाते या वीडियोज़ नहीं बनाते मे बी आपके 99% आ जाते. आई डोंट वांट टू बिलीव दिस बिकॉज आई डोंट थिंक यूट्यूब वॉज एनी वे लाइक दैट. बट ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट शूटिंग and editing it takes time and maybe जो टाइम मैंने वहाँ इन्वेस्ट किया यूट्यूब पर आई कुड हैव इन्वेस्टेड इन स्टडीज. बट अदर थिंग इज दैट कि 24/7 आप पढ़ नहीं सकते, सो यू नीड टू डू समथिंग एंड आई कैन नॉट टेक इट बिकॉज यूट्यूब इज समथिंग जहाँ से मैंने ग्रोथ ही करना सीखा. लाइक आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ वेरी न्यू थिंग इन माई लाइफ. आई नेवर नोन दैट you can earn through. Of course I knew it that you can earn through YouTube, but actually when earning through I earned through when I earned on YouTube I get first payment because of YouTube. I was so happy, and that thing I don't think I regret my decision of taking YouTube anyways. And also the fact that when I started my YouTube channel I was not in a good phase of my life. Like I was very sad and there was no reason for me to smile, and I think YouTube gave me that. YouTube always motivated me to study more. Making content was not one thing, I was doing that on regular basis and I was doing the same thing which I shown on YouTube. So it was definitely a source of motivation for me and staying positive all the time because you need something like कुछ तो चल रहा हो अच्छा कि आपका पढ़ाई पे फोकस हो सके. So it was just that. So anybody saying that is not acceptable. The reason is coaching. I didn't take coaching last year. Like मैंने category 3 जब दी थी तब मैंने कोचिंग लिया था, but 2024 में I decided कि I will do self study because I already had the experience of coaching and I had resources and books of previous year that the institution has given me. So I thought why not to try it? It's not like that. Of course I seriously wanted to do self preparation, but it's a whole different case because I really don't want to believe that coaching is the reason. But I just want to tell you कि since this video is all about the things that I didn't do for my preparation and hence it scored 72%. So of course इसका जो opposite है वो उसका reason हो सकता है कि coaching लेना could be the reason that I could have scored 99%. I just say कि coaching लेना is good because see you get the guidance, proper guidance and limited resources, best resources. क्योंकि कोचिंग वाले इतने टाइम से पढ़ा रहे, इतने टाइम का एक्सपीरियंस है तो उनके पास जो कलेक्शन होगा या मॉक्स होंगे या जो भी उनकी स्ट्रेटजी होगी वो बेस्ट होगी क्योंकि उनको इतना टाइम से पढ़ाना आ रहा है. उनको हर बच्चा समझ में आता है. आई फील इट कि उनको बच्चों की साइकोलॉजी समझ में आती है कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है. आई थिंक कोचिंग इज इन दैट वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स रियली गुड इफ यू जॉइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. एंड ऑल्सो अदर थिंग इज सेम विद अदर थिंग कि यूट्यूब जो है लाइक मैंने अपनी पूरी स्टडी सेल्फ प्रिपरेशन यूट्यूब के थ्रू किया था एंड आई फाइंड सम ऑफ द वेरी गुड यूट्यूब चैनल्स ऑन YouTube and those are really good, like good than any other coaching that I would pay for. And you also like many of you know that there are really good channels out there and मैंने बहुत ज़्यादा channels पे research करके finally figured out that what are the channels that are good for me. And this is what I want you to understand is that it's not about the coaching, it's not about going to a famous coaching, that it's about you. like आपको किससे समझ में आ रहा है, किस टीचर का पढ़ाना आपको समझता है, किस टीचर की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, उनका समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है. दैट्स व्हाट मैटर अल्टीमेटली. क्योंकि मैंने ये यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद फाइनली आई फिगर्ड 5 ऑफ द वीडियोस और 5 ऑफ द चैनल्स जहाँ से मैं इसे पढ़ना चाहिए कि उनका मुझे समझ में आ रहा है. मे बी जो अदर चैनल्स हैं उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे, वॉट एवर, इट डज नॉट मैटर. वॉट मैटर इज़ कि आपको समझ में आना चाहिए. अगर आपको समझ में आ रहा है इट डजंट मैटर कि लोग अगर कमेंट में भी लिख रहे हैं कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे, बट आपको समझ में आ रहा है देन यू शुड गो फॉर इट. सो दिस इज व्हाट इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. लाइक आप एकदम से समझ में नहीं आएगा. हर डिसीजन अगर आप कोचिंग का डिसीजन ले रहे हैं देन यू हैव टू थिंक ट्वाइस. लाइक कि आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, या फिर आप कोचिंग ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, या बहुत सारे रीजंस होते हैं. या फिर अदर वे में हम देखें तो कोचिंग से हमें पता चलता है कि कितना कंपटीशन है. व्हेन यू गो कोचिंग यू मीट एस्पिरेंट्स एंड यू रियलाइज दैट आप कहाँ स्टैंड करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. एवरीथिंग इज देयर. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू सिट एंड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग डिसीजंस ऑफ डूइंग सेल्फ स्टडी और नॉट, और गोइंग टू कोचिंग और नॉट. बिकॉज सेल्फ स्टडी इज इंडीड वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर इज नोबडी at your back telling you to study. You have to do it all by yourself. You should have that dedication in you, that spirit, hard work, that you get up daily and follow the timetable. Because sometimes coaching will provide you everything in your hand. Like they will provide you with resources, they will give you daily target to do, and that could really help you. But if you're doing self preparation, all you have to you have to make it all for you. So it's just, I'm not saying coaching is good, coaching is bad, self preparation is good, self preparation is bad. It's just think twice before whatever decisions you're taking. So it's just that. By the way, अगर आपको चैनल के लिस्ट चाहिए, I will be more than happy to share. Please let me know in the comments. I'll definitely make videos on free YouTube channels, that can help with your preparation. Because मेहनत तो मैंने की थी, ढूंढे तो थे मैंने बहुत अच्छे चैनल्स. तो अगर आप बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली उनकी वीडियो बनाऊंगी, उनके लिंक शेयर करूँगी यूट्यूब चैनल्स की. Anyways, the other mistake which is also
very dangerous mistake which you should not do, and I did, was not analyzing the marks. Though I did try, like I do, but honestly, आपने बहुत सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे कि मॉक को एनालाइज करने में, मॉक देने से, लाइक मॉक्स देते हैं हम 2 घंटे का. इट इज सजेस्टेड कि जो आप एनालाइज करें तो आपको एटलीस्ट 4 घंटे तक एनालाइज करें और सब कुछ करें. आई वॉज टू बैड एट दिस. जनरली द ओनली रीजन वॉज आई वॉज इट वॉज सो बोरिंग. लाइक आई कांट एनालाइज, लाइक जो अपने क्वेश्चन किए, जो नहीं आए, जो आए उसको देखो, वीडियो सोल्यूशन देखो, ये सोल्यूशन देखो, एंड नोट डाउन कि क्या गलत था, ये सब वो सब मैं, आई वॉज टू बैड. आई डू, बट मुझे सबको कहीं ना कहीं आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर डूइंग इट एंड नॉट genuinely finding my mistakes. For example, ज्योमेट्री, जैसे साइड की ज्योमेट्री मैंने नहीं किया था तो मैं उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं करती थी, एंड उसको तो मैं स्किप ही कर देती थी, उसका सॉल्यूशन भी नहीं देखती थी जब मेरा मॉक हो जाता था कंप्लीट. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मे बी आप वो टॉपिक नहीं भी कर रहे हो तो आप देख के उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप समझ लेते हो या थोड़ा भी समझ लेते हो, यू नेवर नो कि वो कहाँ काम आ जाएगा, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन में वो आपको यूज हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट आई थिंक माई मिस्टेक वॉज, दैट while analyzing I was not good at analyzing mocks. So another reason is choosing right study material. Not right study material, but sticking to one study material, because this was again my mistake. I think you have to trust. I mean, अगर आप किसी coaching institute को join करते हैं, then trust them. Trust them with their resources and materials that they provide you, that these are sufficient for your preparation. You have to, because what I used to do is trying on different resources, like different books, different author books. If you're, for example, studying from Arun Sharma, then study. Don't listen to people that it's not good, it's like that. See, everyone know exactly what's happening. For example, Arun Sharma का ऐसा बोला जाता है कि it's very difficult book, and जो क्वेश्चन होते हैं वो कैट के एग्जाम के लेवल से भी डिफिकल्ट होते हैं, so it's not worth it. बट मैंने जो उसकी जो थ्योरी है अरुण शर्मा में जो गिवन है रिगार्डिंग एवरी टॉपिक, वो बहुत अच्छी है, इतना डिटेल में दिया है कि इट्स टू गुड. But what I did was I also went through different resources as well. I was not able to trust something. That's what you should do. You have to trust, accept that this is, ऐसा नहीं होगा कि मैं ये सोचती थी कि इस बुक में अगर ऐसा दिया हो या फिर वो बुक ज़्यादा अच्छी हो या फिर उसमें जो क्वेश्चन हो वो अगर कैट एग्जाम में अगर ऐसा कुछ नहीं होता है. जो सिलेबस होता है वो लिमिटेड होता है, जो फॉर्मुलेज होते हैं वो सेम होते हैं, एवरीथिंग इज सो सिमिलर. तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि कुछ रिसोर्स बहुत ही बेकार हो गए या कुछ बहुत ही अच्छे हो गए. तो जो भी आप लें, आई एम नॉट हियर सजेस्टिंग यू एनीथिंग, बट आप जिस भी रिसोर्स पे ले रहे हैं, प्लीज स्टिक टू इट, ट्रस्ट इट कि ये ही अच्छा होगा. बिकॉज अगर आप एक रिसोर्स से एक बुक से पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना करा है, कितना टॉपिक्स बचे हैं, क्या डिफिकल्ट है, क्या ईजी है, कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए. Taking the other day, taking different materials and trying new stuff will not work it for you. This is what I believe. And yeah, it's all about that, my mistakes and everything. But yeah, please let me know in the comments कि कोई YouTube channel अगर आप free resources के लिए ढूंढ रहे हैं और आप confused हैं थोड़ा, so I can really help. I can make videos on that as well. So please let me know, and of course please share your journey कि आपकी CAT 24 की journey कैसे रही. And I'm more interested in knowing people who could not make it to good B school or could not get the desired percentile they want, because it's very normal, because not everyone can get. Of course, if somebody is scoring 99 percentile, so it's only because somebody is scoring 1, 2, 3, 4 or 90 till 98 percentile. That's only the reason why you have scored 99. So you should thank all others who helped you to get that 99 percentile. And as I always say, and I always believe in this, like my previous video है YouTube पर a day in life of CAT aspirant, which has around 50k views, and उस वीडियो में मैंने लास्ट में ये भी बोला था कि everyone want to know the reason behind your success, but nobody want to know the reason behind your failure. Like, and I had given example, like if you succeed, for example, so आपके पास सब जाएंगे. For example, if I would have scored 99 percentile, you would have clicked my video to know that how I scored 99 percentile, like what were my strategies and everything. But if I fail in scoring that, nobody come and ask me, oh, what were the reasons, you were not doing well physically, mentally, financially, any kind of pressure or some other reasons, you were distracted by something. These all are reasons. I am somebody who consider phone also as a reason and not a distraction, because it's in today's time, since हम रील्स देखते तो attention span इतना कम हो गया, we cannot focus on study, and this is a serious thing. I cannot say you कि phone side में रख के पढ़ने बैठ जाओ and stop doing this. No, it's not easy. You need time to improve on that, to improve your attention span and to get yourself into study. So I consider everything as a reason. So I believe that this channel is mostly for them who cannot succeed, or I don't consider you as a failure. This is what my point is, that there are definitely the reasons, and I would like to know your reasons, or maybe if you have succeed also, your success story, your failure story, not only in CAT exam and other exams if you ever appeared, because I'm not here to judge you. I would be more than happy to read your stories in the comments, and definitely, because I don't think anybody fails. Yeah, I just want to tell you कि it's not something, it's just, अगर आप मेरी तरह फेस कर रहे हैं कोई सिचुएशन कि आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको कैट का पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, अभी 6 months बचे हैं ये वो, या आपको कोई कॉलेज मिल रहा है बट आप सच में नहीं जाना चाहते और बट आप रिपीट भी नहीं करना चाहते, इतने सारे कन्फ्यूजन में हो, जस्ट सिट एंड स्टे काम, सब सॉर्टेड हो जाएगा, समथिंग विल बी फाइन. And I really pray for you कि जितने भी आपके as I always say, all your sweet dreams come, may all your sweet dreams come true and you get whatever you want in your life. And so always believe in yourself, no matter what, you'll get this, not this year, then next year, or maybe something else is waiting for you. So it's okay, don't lose hope, and please understand these are just exams. And I really wish you all the best, to all the aspirants who are appearing for CAT or other management entrance tests this year. Please ask any query that you have regarding these exams or anything else you want to know from me in the comments. I would be more than happy to share it with you. Thank you so much for watching. Please
ignore if मैंने ज़्यादा बोला हो, कम बोला हो, कुछ भी बोल दिया हो फालतू का, because as I said कि I'm not used to off camera and this is the first video I'm making, so maybe I did some mistakes. But thank you so much for watching and I hope you enjoyed this video. Please do like, share and subscribe to my channel, and see you very soon. Bye.